Hi students, welcome to DS Economics channel. आज हम डिस्कस करिबा UGC NET जून 2012 इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो पेपर 3 रो पार्ट 2. इथरे पार्ट 1 ला हमें 1 टू 25 क्वेश्चन डिस्कस करथिले. पार्ट 2 रे 26 रु अप टू 50 पर्यंत डिस्कस करिबा. आ गोटे पार्ट रहिबो माने 75 टा क्वेश्चन अछि पेपर 3 रे. तटा पार्ट 2 रे मिडिल पार्ट टा कवर करिबा. तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करिबा. क्वेश्चन नंबर 26 आज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following is not specialized sub market of the money market? तो मनी मार्केट रो गोटे सब मार्केट स्पेशलाइज सब मार्केट कोटा नुहे. फास्ट हूँ कोलेट्रल लोन मार्केट, डिस्काउंट मार्केट, बॉन्ड मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट. तो मनी मार्केट रो गोटे सब कैटेगरी कोलेट्रल लोन मार्केट रही, डिस्काउंट मार्केट रही, एक्सेप्टेंस मार्केट रही, किंतु बॉन्ड मार्केट ता अंडर रे आसुना सी अलग. तो ये सी हो राइट आंसर बिकॉज द मनी मार्केट डील्स विथ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट हैव ए मैच्योरिटी पीरियड और लेस देन 1 ईयर. मनी मार्केट जो लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी पीरियड थी. सो इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड हेल्प्स इन मीटिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लेंडिंग नीड्स ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. आ जो रहा स्पेशलाइज्ड सब मार्केट ऑफ द मनी मार्केट से कॉल मनी मार्केट आसूसी फॉर ए व्यू वेरी शॉर्ट टर्म जोटा ओवरनाइट और 2 14 डेज. तापर कोलेट्रल लोन मार्केट लोन्स सिक्योर्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज एंड डिस्काउंट मार्केट होची फॉर ट्रेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेजरी बिल एट ए डिस्काउंट. आउ एक्सेप्टेंस मार्केट होची फॉर ट्रेड बिल्स एक्सेप्टेड बाय बैंक्स फॉर फाइनेंशियल ट्रेड. सो बॉन्ड मार्केट हाउएवर डील्स विथ लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट maturity more than 1 year such as government bonds and corporate debentures. Therefore it belongs to the capital market not the money market. तेणुकरी आमर सी हो राइट आंसर. 26 गला. 27 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन कोर्स. खुसरू, दंतवाला, नरसिम्हा, केलकार. तो कोटा केबे आसीतला फास्ट देखिबा. खुसरू कमिटी आसीतला 1989 रे. 1989 रे आसला खुसरू कमिटी फॉर्म टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल क्रेडिट. देन दंतवाला कमिटी आसला 1978 रे. 1978 रे आसला. दिस कमिटी वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP को रिव्यू करने. दंतवाला कमिटी आसला. नरसिम्हा कमिटी एक्चुअली 1991 रे प्रथमे आसला. तापर आ गोटे भी नरसिम्हा कमिटी 2 आसीतला 1998 रे. देन केलकार कमिटी आसला 2002 रे. 2002 रे आसला. केलकार कमिटी रेकमेंड फिजिकल रिफॉर्म्स एंड रोड मैप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट एक्ट जोटा FRBM एक्ट कहगला. सो नरसिम्हा कमिटी 1991-98 रे फोकस ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. तो या भितर क्रोनोलॉजी सेट कले प्रथमे किए आसीबो. प्रथमे दंतवाला आसीजिवो फास्ट रे. तापर 1970 तापर 1989 खुसरू कमिटी. देन केलकार कमिटी देन तापरे 1991 नरसिम्हा कमिटी. देन केलकार कमिटी 2002 रे आसला. सो 2134 सो 1 आसे 2134 2143 अछि 21 एक्चुअली 2134 होबाटा 2134 इज राइट आंसर. हो 27 गला. 28 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. 28 रे एसेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन अछि. सो फर्स्ट एसेशन कहूँ द वर्किंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स और RRB रिवील्ड दैट दे eroded their capital base. Yes, regional rural bank were established to provide credit to rural and weaker section. However, over time many of them become financially unviable. So तारा बहुत सारा reasons अच्छी जमती कि because high operating cost from small scattered branches in rural areas, poor loan recovery performance, low profit
अनप्रडिक्टेबिलिटी एंड एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट सप्लाई और गवर्नमेंट सपोर्ट तेणुक रिजन कौन दूसरी मेनी आरआरबी आर नॉन वायबल एंड हैविंग हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट येस सेटा गोटे रिजन सो एज ए रिजल्ट देयर कैपिटल बेस इरोड मीनिंग देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीकेंड सो रिजन ही डायरेक्टली कौन करुच्ची एक्सप्लेन करुच्ची एसेसन को सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए 28 रो राइट ऑप्शन ए हिजो तापर 29 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो आरबीआई कोड़ा को रेगुलेट करुच्ची आरबीआई 1 2 एंड 4 नहीं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया नेशनल हाउसिंग बैंक स्टेट बैंक को नुहे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो ये तीनटा रोचे आरबीआई रेगुलेट सर्टेन स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉन एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिस इंस्टीट्यूशन प्ले ए की रोल इन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंसिंग तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भितर आमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आसूची जोटा प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड तापर नेशनल हाउसिंग बैंक आसूची सो प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देन स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बा सीडबी जोटा फाइनेंशियल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एगुड़िक आसूची आ गोटे नाबार्ड आसूची फाइनेंशियल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पाई तो ये सब अच्छा एसबीआई तांको कैटेगरी अंडर रे आसू नाही तो ये 1 2 एंड 4 1 2 4 अच्छी ऑप्शन नंबर ए रे तो ए हिजो राइट आंसर 29 रो देन क्वेश्चन नंबर 30 को आसीबा 30 रे कोर इन्फ्लेशन इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन कहले कोटा बुझाए कोर इन्फ्लेशन that is based only on food and energy price no that includes items that face volatile price movement notable food and energy no core inflation कहले that exclude item that face volatile price movement notably food and energy yes एटा ही राइट आंसर हम core inflation रे because core inflation represent the underlying trend in the general price level by excluding temporary or volatile price movement especially those of food and energy so these items fluctuate frequently due to seasonal or external factors like weather or global oil prices so by removing them core inflation gives a clear picture of long term inflationary trend which helps policymakers especially the RBI in formulating monetary policy so option C is your right answer then question number 31 first green revolution was primarily concerned with the production and productivity of first green revolution कहा ऊपर हेतला pulses oilseed wheat ना fruit and vegetable तो first green revolution rice and wheat को लेके हेतला तो wheat है जो बैठी right answer जोटा कि 1965 पाखापाखि आसला तो व्हीट राइस रो प्रोडक्शन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर इरिगेशन माध्यम रे हेई परिबो तो जनरली एटा पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ए सब रे अधिक हेतला मेन क्रॉप हिसाब रे ताले हमें व्हीट को नेकी जाइतलु व्हीट आउ राइस को देन क्वेश्चन नंबर 32 को आसीबा ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2004-5 टू 10-11 एग्रीकल्चरल सेक्टर जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी कौन है 2004 रु 10 पर्यंत विटनेस ए हायर ग्रोथ रेट देन द ओवरऑल जीडीपी नो विटनेस ए लोअर ग्रोथ रेट देन द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेटा आस्ते आस्ते कमुची एबे पर्यंत विश 3 to 4% एनम पाखापाखि रोचे एवरेज कमुची तो ये राइट आंसर बी हो देन क्वेश्चन नंबर 33 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट आर फूड मैनेजमेंट कहले कौन बुझे प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स टू रेम्युनरेटिव प्राइस येस फार्मर्स पाखरु प्रोक्योरमेंट प्राइस रे माने सर्वनिम्न निर्धारित मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनुसार तांको पाखरु आमे कौन गवर्नमेंट नौची तापर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू कंज्यूमर्स एट एफोर्डेबल प्राइस येस एबे तो गवर्नमेंट हमर ओडिशा गवर्नमेंट फ्री रे ही चाउल दउची मेंटेनेंस ऑफ फूड बफर्स फॉर फूड सिक्योरिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी येस फूड सिक्योरिटी और प्राइस स्टेबिलिटी फूड्स माने स्टोरेज रोची एफसीआई रे और डिस्ट्रीब्यूशन करूची पीडीएस माध्यम रे आउ
एटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी माध्यम प्रोक्योरमेंट प्राइस एमएसपी पीडीएस एफसीआई मिनिमम सपोर्ट प्राइस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये तीनटा रही ताले ऑल ऑफ दिस हो राइट आंसर तीनटा ऑर्गेनाइजेशन तीनटा अलग अलग काम रही देन क्वेश्चन नंबर 34 को आसवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन द ईयर 2009-10 तो पल्सेस रो उत्पादन कौटी अधिक होता उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश रे जो अधिक पल्सेस उत्पादन होता 35 नंबर क्वेश्चन को आसवा ए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर किसान क्रेडिट कार्ड केबे आसिला एटा 2001 5 1998 ना 1995 तो 1998 रे आसीथिला किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट इंडिया इंट्रोड्यूस करथिला सेतबेले आरवी गुप्ता कमिटी रेकमेंड करथिला ताकू सो इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय नाबार्ड एंड आरबीआई to provide timely and hassle-free short-term credit to farmers for cultivation and other agricultural needs. So the scheme enables farmers to withdraw money from banks as per their crop requirement, similar to a credit card system. So over time it has expanded to cover fisheries, animal husbandry, agricultural allied activities as well. तो तापरे अधिक ऐड होइछि किसान क्रेडिट कार्ड अंडर रे तो 1998 रे आसीथिला Then question number 36 increase in agricultural production and productivity is a precondition agricultural production और productivity बढ़िबो एटा कहार गोटे precondition अटे to raise the share of agriculture in GDP yes agriculture production और productivity बढ़िबो माने share agriculture in GDP बढ़िबो to ensure national food security yes जातीय खाद्य सुरक्षा ता द्वारा अना जाई पाइबो टू प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी येस लाइवलीहुड लोक मैंने काम पाइबा और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अचीव हो पारिबो सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट इज राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 37 को आसीबा सिलेक्ट द ईयर इन व्हिच द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी और हाईएस्ट को ईयर रे सेटा हाईएस्ट थिला 8 9 6 7 7 8 ना 5 6 सेटा 8 9 रही थिला हाईएस्ट ए सब रे देन 38 which item is likely to be the most significant item of expenditure of the central government during 2011-12 most significant item सेते बळे जदि हम देखिबा कोनटा थिला सब्सिडी डिफेंस इंटरेस्ट रु सब मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम सेते थिले अधिक मिलुथिला देन क्वेश्चन नंबर 39 को कने इंटरेस्ट पेमेंट रु सबुटो अधिक आसुथिला और जाउथिला देन क्वेश्चन नंबर 39 आइटम्स ऑफ सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड स्टेट गवर्नमेंट रो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर भितरे को गुडिक आसुची फर्स्ट होची एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यस एटा सोशल सेक्टर भितरे आसुची एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट ना सेटा नुहे मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ यस मेडिकल पब्लिक हेल्थ आसुची सोशल सेक्टर रे वाटर सप्लाई सैनिटेशन सोशल सेक्टर रे आसुची तो ये तीनटा जाक सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रो एजुकेशन स्पोर्ट्स मेडिकल पब्लिक हेल्थ वाटर सप्लाई सैनिटेशन गुड़िक सब आमर लिटरेसी हेल्थ केयर हाइजीन ये सब पाई आसुची किंतु एनर्जी ट्रांसपोर्ट सेटा इकोनॉमिक सर्विस नॉट सोशल सर्विस तेणुक 1 3 आउ 4 1 3 4 अच्छे ऑप्शन नंबर बी रे बी हो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 को आसीबा 40 रे से वाला लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अच्छी मैचिंग करबा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी सेटा किए देथिले एटा वाग्नर को कांसेप्ट थिला लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी एडल्फ वाग्नर डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट कंसंट्रेशन इंस्पेक्शन तीनटा जाक इफेक्ट किए देथिले पिकॉक वाइजमैन सो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पिकॉक वाइज फर्स्ट जो एडल्फ वाग्नर को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी इट स्टेट्स दैट एन इकोनॉमी ग्रोज द रोल एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज तो सेटा गोटे स्मूथ वे बढ़ियो बोली कहिथिले देन पिकॉक वाइजमैन कहले पब्लिक एक्सपेंडिचरटा जिगजैग वे रे स्टेप लाइक फैशन ले इंक्रीज हबो सो दिस हैपेंस वाइजमैन एंड पिकॉक अप्रोच दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर डजंट राइज स्मूथली राइज करिवो नहीं बट रेदर जम्प्स ड्यूरिंग क्राइसिस और लाइक वार एंड देन सेटल एट ए हायर लेवल कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट
देन फेडरल फाइनेंस कॉन्सेप्ट आर एन भार्गवा फेडरल फाइनेंस देइछन्ती आर एन भार्गवा contribute significantly to the theory of federal finance, focusing on the division of financial power and function between the center and state in the federal system. Then functional finance देइछन्ती AP Lerner, तो for is your right answer. AP Lerner concept of functional finance emphasizes that fiscal policy should focus on achieving economic objective like full employment and price stability rather than balancing budget. So 2314 अच्छी ऑप्शन नंबर बी रे, तो बी है राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 41 एसेसन एंड रीजन वाले क्वेश्चन अच्छी. फर्स्ट एसेसन एंड रीजन ओके. फर्स्ट अच्छी द यूनियन बजेट फॉर 2010-11 हैज बिगन द प्रोसेस ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन विथ ए पार्शियल विड्रॉल ऑफ द स्टिमुलस मेजर्स. यस ठीक अच्छे. Assertion reason कहूँ there was a clear evidence of the economic recovery in the economy. Yes, so both true अच्छी and correct explanation अच्छी 41 रे. कहीं ना से टाइम रे withdrawal some stimulus measures निया जाइथिला, तो ऑप्शन ए है जो राइट आंसर. तापर 42 नंबर क्वेश्चन को आसवा अरेंज द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन कोड. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आम ताको सजेवा. कमिटी ऑन टैक्सेशन एंड एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम एटा केबे आसिला ना 1971 रे. तो 1971 रे आसी. तार मेन गोल थिला फोकस ऑन टैक्स इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल इनकम. देन सेकेंडरी रिपोर्ट ऑफ द टैक्स फोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्स उपरे केबे आसिला 2002 रे. 2002 रे आसिला. एंड 13th फाइनेंस कमिशन जोटा कि 10 to 15 13th फाइनेंस कमिशन टा डीलिंग विथ फिजिकल ट्रांसफर एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट ये तो ईयर दे दीजिए. तापर इंडियन टैक्स रिफॉर्म रिपोर्ट ऑफ ए सर्वे. तो इंडियन टैक्स रिफॉर्म टा 1971 रे आसीथिला. दिस वाज एन अर्ली सर्वे ऑफ टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया. सो इटा फास्ट. तापर 1971 तो दुटा अच्छे फर्स्ट सेकेंड और तापर थर्ड एटा 4 मैं IV 2I 3I IV 2I 3I जोटा ऑप्शन बी रे अच्छी. बी है जो राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 43 को आसवा. इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट ए टैक्स ऑन वेज इनकम फॉल्स होली ऑन लेबर इफ लेबर उपरे टोटल टैक्सटा पड़ीज. कॉम्पिटिटिव मार्केट रे लेबर उपरे टोटल टैक्स पड़ो केतोले ना लेबर सप्लाई इज इनइलास्टिक. जेतोले लेबर सप्लाईटा इलास्टिक न होई कि पूरा इनइलास्टिक थिबो लेबर सप्लाईटा. सो टैक्स ऑन वेज इनकम फॉल्स होली ऑन लेबर इफ लेबर सप्लाई इज इनइलास्टिक. यस 43 राइट आंसर ए है जो बिकॉज द इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. एंड इफ द लेबर सप्लाई इज इनइलास्टिक, workers cannot easily reduce their labor supply in response to the tax. So therefore the entire burden of the tax fall on labor as employees pass it on to the wages. So conversely, if labor supply were elastic, then worker could reduce labor effect, focusing employees to bear part of the tax burden. So thus tax burden falls wholly on labor when labor supply is inelastic. So 43 right answer A है. Then question number 44. The apex financial institution responsible for the development of small and micro industries in India. India रो small micro industries को किए देखुची. IDBI, SSB ना NABARD. SSB है right answer. SSB the apex financial. SSB होची small industries development bank of India was established in 1990 is the apex financial institution for promotion, financing and development for micro, small and medium enterprises MSME ପାଇଁ. So IDBI टा primarily provide long term finance for industrial development और NABARD तो हमर apex bank अच्छी focus on agriculture and rural development financing. So small आउ ये टा है जो right answer small and micro industries एटा SSB है जो.
सेट भी होची स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 44 गला 45 को आसीबा द जनरल मेथड यूज्ड टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडिया रे जो अछि ताको सॉल्व करिया पई को मेथड को आमे अप्लाई करिवा फास्ट होची कलेक्टिव बार्गेनिंग यस एटा हे परिबो कंपलसरी आर्बिट्रेशन नो कंपलसरी हबनी एडजुजेक्शन एटा हे परिबो डिसीजन बाय ट्रेड यूनियन नो सो ऑप्शन 1 आउ 3 ए दिटा हे परिबो बिकॉज industrial dispute in India generally resolved through the methods like collective bargaining means direct negotiation between employers and employees to resolve conflict and adjudication means legal resolution through labor courts, industrial tribunals or national tribunals. Other major compulsory arbitration means it is less common and used only when parties fail to agree. Then decision by the trade union alone is not the official dispute resolution method. तेणुकरी 1 and 3 है जो राइट आंसर ऑप्शन डी रे अच्छी. देन क्वेश्चन नंबर 46 को आसीबा एसेसन एंड रीजन वाला क्वेश्चन अच्छी. फर्स्ट रे कहूची जे इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री इज ए हाई नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री दैट हैज डेवलप्ड रैपिडली मेनली टू इट्स ओन मेरिट इन इंडिया. यस आईटी इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो अप करूची से ठीक अच्छे बिकॉज आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया ग्रीव रैपिडली ड्यू टू स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप ग्लोबल डिमांड. तो यहाँ ट्रू अच्छे रीजन कौन ना इंडस्ट्री दैट इज बेस्ड ऑन हाई नॉलेज डजंट नीड एनी सिग्निफिकेंट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट नॉर देयर इज मच स्कोप फॉर आउटसाइड इंटरफेरेंस. नो यहाँ इनकरेक्ट पूरा गवर्नमेंट बिना सपोर्ट कि ये से हो पार ना. तो रीजन इनकरेक्ट अच्छी बिकॉज इवेन दो इट इज नॉलेज बेस्ड द आईटी सेक्टर रिसीव्स सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स टैक्स इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट. तेणुक रीजनटा इनकरेक्ट अच्छी. सो ए करेक्ट आर रॉन्ग ए करेक्ट आर रॉन्ग जोटा कि ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी. तो ए हो राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 47 मैच सेबी विथ द एप्रोप्रिएट आइटम एमंग द फॉलोइंग सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ता अंडर किए आसीबो रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट रेगुलेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट ना ऑल ऑफ दिस. सो सेबी रो मेन काम होची रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट को से रेगुलेट करिवो नॉट मनी मार्केट और कमोडिटी मार्केट. कैपिटल मार्केट मेन फंक्शन ले protecting investor interest, regulating stock exchange and intermediaries, ensuring transparency and orderly functioning of the equity and debt market, and money market are regulated primarily by RBI and commodity market are forward market regulation. तेणुकरी एटारे रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट मेन एप्रोप्रिएट आइटम हम सेबी अंडर. 47 गला. 48 नंबर क्वेश्चन को आसीबा given below the various combination given to the steps of industrial development select the correct sequential combination of steps of industrial development देज. तो correct step टा कोटा हबो. तो ऑप्शन देखो फास्ट मॉनेटरी एक्सपेंशन है तापर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तापर फॉल ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इज स्टिमुलस. नो एटा नुह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है फास्ट. ओके फॉल ऑफ इंटरेस्ट मनी एक्सपेंशन इन्वेंटरी नो एटा भी हम ना. मॉनेटरी एक्सपेंशन है फॉल ऑफ इंटरेस्ट मनी एक्सपेंड कले इंटरेस्ट रेट कमिबो इन्वेस्टमेंट इज स्टिमुलेटेड येस देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एटा ही राइट आंसर हो. 48 नंबर क्वेश्चन रो सी हो राइट आंसर बिकॉज द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एज फॉलोज. फास्ट आसो मॉनेटरी एक्सपेंशन then fall of interest rate then investment is stimulated then industrial development. So monetary expansion means increase in money supply by the central bank and fall of interest rate means easier availability of credit reduce borrowing cost and investment is stimulated means lower interest rate encourage firms to invest in industrial project and industrial development means increased investment leads to expansion and growth of industries. So option C एठी हो राइट सीक्वेंस मॉनेटरी एक्सपेंशन है तापर फॉल ऑफ इंटरेस्ट है देन इन्वेस्टमेंट इज स्टिमुलेटेड देन इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट स्टार्ट हम। क्वेश्चन नंबर 49 को आसीबा। अंडर द पोस्ट 1991 इकोनॉमिक पॉलिसीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट 1991 पॉलिसी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सपोर्ट करुच्ची? प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करुच्ची, येस। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करुच्ची, स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करुच्ची, ऑल ऑफ दिस हो ताले राइट आंसर। प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डीरेगुलेशन द्वारा एफडीआई रिडक्शन एंड लाइसेंस रिक्वायरमेंट आउ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को केमती हेल्प करुच्ची ना इंसेंटिव लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम एंड ड्यूली एग्जाम्पशन। आउ स्मॉल इंडस्ट्रीज सपोर्ट थ्रो सीडबी क्रेडिट फैसिलिटी टेक्नोलॉजी अपडेट्स। तो ये सब गुड़िक हो। क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी ऑफ लियोनटिप स्टैटिक मॉडल? तो लियोनटिप स्टैटिक मॉडल ले कोटा करेक्ट हम? पियर्स प्रोविंस रूट ना वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द primal should equal to the value of the objective function of the dual of the primal or Kuhn-Tucker condition, Hawkins-Simon condition। तो ये कोटा राइट आंसर हो ना Hawkins-Simon condition या सहित राइटली आसूची कहीं द लियोनटिप इनपुट आउटपुट मॉडल इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी रिक्वायर दैट the system of production be able to satisfy final demand without negative output। So the Hawkins-Simon condition ensure that the Leontief matrix or I minus A is productive, meaning all principal minor are positive, which guarantees positive output for given final demand, feasibility of production plan and ए दुटा मेन रिजन रोचे अन्य गुड़िक अलग जिनस प्योर पीएफ जो रूटा से रिलेट्स टू ग्रोथ रेट्स इन डायनामिक सिस्टम एंड Kuhn-Tucker कंडीशन रोचे एप्लाई टू नॉन लिनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। आ प्राइमल डुअल प्रॉब्लम टा तो इट इज ए पार्ट ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग ऑप्टिमलिटी नॉट फिजिबिलिटी इन लियोनटिप स्टैटिक मॉडल। तो फिजिबिलिटी इन लियोनटिप स्टैटिक मॉडल टा Hawkins-Simon कंडीशन सैटिस्फाई करुच्ची। तो डी हो यार राइट। ये भाव में आज आम कवर करदे पार्ट 2। तो नेक्स्ट पार्ट रे क्वेश्चन नंबर 51 रु 75 पर्यंत कवर करी। से समस्त थैंक यू। जय जगन्नाथ।